हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर चुकी थी, जो कि फर्स्ट पार्ट था और ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट। तो मैंने 5th यूनिट तक आप लोग से शेयर की थी, अभी मैं आगे शेयर कर रही हूँ। जितने भी यूनिट बची है वो आप लोग से शेयर करती हूँ, राइट। तो ये लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसमें सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ हार्ट इन डिटेल। नेक्स्ट है, नेम द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट विद अ ब्रीफ डिटेल ऑफ ईच चैम्बर एंड द वॉल्व्स इन बिटवीन दैम। डिस्क्राइब द राइट आर्टियम इन डिटेल। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, डिस्क्राइब द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, राइट अ नोट ऑन ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आ जाएगा, एक्सप्लेन स्प्लीन इन डिटेल, लोकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स, ब्लड सप्लाई, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन। हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हार्ट का एक आप डायग्राम बना दीजिएगा, राइट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें आ जाता है, वॉलियर्स रिंग्स, मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेशंस ऑफ thoracic duct. नेक्स्ट आएगा, वेयर इज स्प्लीन लोकेटेड एंड गिव इट्स 4 important functions. Name 4 groups of cervical lymph nodes. Next, apex beat and branches of the right coronary artery. Name 3 layers of wall of blood vessels. Mention 2 differences between large and medium size arteries. Next, mention 2 differences between the structures of large and artery and large vein chambers of heart. यूनिट आ जाती है आपकी, नेक्स्ट आ जाती है जो कि 7th है, दी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेजल कैविटी एंड इट्स अप्लाइड एनाटॉमी। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डक्ट एंड डिस्क्राइब लंग्स इन डिटेल विद अप्लाइड एसेप्ट्स। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द राइट लंग्स इन डिटेल, मेंशन द डिफरेंसेस फ्रॉम लेफ्ट लंग्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स इन डिटेल विद द डायग्राम। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द air senses opening into middle meters. Name the paranasal air senses. Name the opening in the lateral walls of nose. Name the bones forming nasal sputum. Next आ जाएगा, name 4 cartilages of the larynx and name 4 cartilages of the larynx. Sorry, ये 2 बार आ चुका है, sorry. Name 4 any muscles of pharynx. Next है, name the parts of respiratory system. Name 2 pleural recesses. Name mention 4 structure passing through the diagram. Mention the actions of intercostal muscle. Next are the respiratory muscles. Name the parts of the respiratory system, right. Unit 8 है, digestive system. Long question, describe the location, blood supply, nerve supply, applied anatomy of rectum. Next आ जाएगा, describe the parts, features, blood supply and histology of stomach. Mention different parts of digestive system. Describe the esophagus in detail. Next है, name the salivary gland, where do they open, and describe the parotid gland in detail. Name the parts of extra hepatic and biliary apart. Describe the anatomy of the liver. Describe the pharynx, right. Next आ जाएगा इसके बाद, describe the duodenum. Name the parts of digestive system and describe stomach in detail. Name the location, surface, border, supply, blood supply and applied anatomy of liver. Short question है, पैराटोड ग्लैंड एंड सबमंडल ग्लैंड आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगा, हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस, डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, स्टमक बेड आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, सॉफ्ट प्लेट्स आ जाता है, डुडेनम एंड पेरिटोनियम and its function, and vermiform appendix. Mention the difference between small and large intestine. Describe pancreas. Next, and name the blood vessels supplying the rectum. Differences between jejunum and linum. Next, I describe the interior and canal, interior and varicose surface of liver. इसके बाद नेक्स्ट है, नेम द पेरिटोनियल फोल्ड्स ऑफ लीवर. नेम डिफरेंट लूप्स ऑफ लीवर, नर्व सप्लाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नेम द पैपिले ऑफ टंग. लिस्ट द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट है, नेम द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. यूनिट 9 आ जाती है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम. शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, द यूरेटर, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, रिलेशंस ऑफ राइट किडनी एंड मेल यूरेथ्रा. नेक्स्ट आएगा, describe the and macroscopic structures of kidney. Describe nephron in detail. Describe the kidney underflowing, heading, location, shape, external features, covering, relations and blood supply. Describe urinary bladder in detail. Add a note on its applied anatomy. Short answer question है, name the parts of nephron. Name the different parts of urinary system and pterigons of bladder and mention the coverings of kidney. Draw a label diagram of nephron. Name relations of the ureter. Mention 2 important relations of urinary bladder in females. Name the parts of the male urethra. Unit 10th है, the endocrine system. Short essay. Describe the pituitary gland in detail. Name the endocrine gland. Describe the thyroid gland in detail. Name the endocrine gland. Describe the pancreas. Next आएगा thyroid gland. Functions of adrenal gland.
पैराथायरॉयड ग्लैंड, नेक्स्ट है रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, राइट। Describe pancreas under flowing heading, location, parts, important relations and histology. Short answer questions है. Name the endocrine gland, mention the parts of pituitary gland, mention the types of cell found in anterior pituitary. Next आ जाएगा name two hormones produced by the nephron for poiesis. Next है name any four hormones produced by pituitary gland. Name two arteries supplying the thyroid gland. Name two ovarian hormones. Name the hormones secreted by thyroid gland. Name the hormones secreted by placenta. Mention the blood supply of pancreas. Describe isolates of the glandgrams. And next आ जाएगा name the disorder thyroid gland, parts of thyroid glands. Next आ जाएगा इसके बाद unit 11th the reproductive system including breast, right. Short answer question है. Name the parts of female reproductive tract. Describe the anatomy of uterus. Next है name the parts of the female reproductive tract. Describe the anatomy of ovary. Question number 3rd है describe the uterus and its ligament. Describe the female reproductive system, sports of uterus, fallopian tube and spermatogenesis and prostate. Next है organization. Describe the structure of mammary gland. Explain the location and structure of ovary. Short answer question. Name the internal organs of female reproductive system. Mention the parts of uterus and next name 4 ligaments of the uterus. Name the layer of wall of uterus. Name parts of fallopian tube. Mention the boundaries of ovarian fossa and mention the layers of scrotum. And next is the Garfield follicle and ducts deferens, right. Name the parts of male urethra. Draw a diagram of structure uterus. तो ये थे क्वेश्चन जो कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है एनाटॉमी का। इससे पहले भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।